And if I am able to demonstrate to your lordships that a constitutional deviation has taken place, then the question of fundamental right violation occurs. Whether it occurs in rem or in personam is the next question. अब समझ आई आपकी बात। वो ये है कि कानून का ऑब्जेक्टिव तो शायद आम आदमी के लिए अच्छा है, लेकिन प्रोसीजर जो अडॉप्ट हुआ है ये हमें बना लेना चाहिए था, पार्लियामेंट ने क्यों बना दिया, ये सवाल है। अब ऑब्जेक्ट is not access to justice fundamental right now recognized as such? Yes, it is. Is not independence of judiciary an integral aspect of access to justice? Indeed it is. Therefore, is not independence of judiciary itself a fundamental right? It is. Is not independence of judiciary a salient feature of the Constitution? It is. Held by full court. Do you think every time the full court sits, that allows the Supreme Court, sitting as full court, to reset in the entire constitutional scheme? It would be unfortunate unless it is done with valid बात ही नहीं reasons. सुन रहे हैं, सवाल ही नहीं सुन रहे हैं, आप जवाब का फिर वही कर रहे हैं। In a system based on the common law UK tradition, is it just the black and white language of the Constitution that is constitutional law, or is that embedded in constitutional law as developed by the case law? In relation to the US Constitution, it is said that 9/10 of US constitutional law is not written in the US Constitution. And sitting as a full court, each time a full court is constituted, is that like a tabula rasa, a blank slate, that we can write on it whatever we want and disregard settled law, fundamental law, fundamental rights? Is this within the power even of a full court? If we are to do that as a full court, disregarding previous precedents, then surely we have to have some weighty reasons to say, declare, for example, today that independence of judiciary is not a salient feature of the Constitution. That independence of judiciary is not a fundamental right. If it is not a fundamental right, out goes access to justice. It's not a question of, I'm speaking for myself, but putting it as a question to you, of whether it is the Chief Justice or the 3-member committee. Who is Parliament to say it's a 3-member committee? Why shouldn't it be a 5-member committee? Why shouldn't it be a 7-member committee? If the answer is that the Supreme Court means the Chief Justice and all the courts, then Parliament should have made a law saying this committee shall constitute of the Chief Justice and all the judges of the Supreme Court. That is, they are the ones who will decide whatever is written in Section 2 and whatever is written in Section 3. Can Parliament pick and choose? Can Parliament say, no, 3 judges is okay with us, 5 judges is too much, 1 judge is too little? These are aspects that go to the independence of the judiciary. Today Parliament says not less than 5 judges to hear interpretation. Section कौन सा है वो आपका? Section 4. Tomorrow Parliament says जी एक law बना देती है जी, I don't know, family matters are to be heard by a bench of not less than 7 judges. Is that part of access to justice? Is that part of independence of judiciary? It is. Fundamental rights. अभी आप देखें अमेरिका में कितना हुआ है, वो जो है आपका राइट ऑफ अबॉर्शन, वो कहाँ लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? लिखा है उनकी कॉन्स्टिट्यूशन? नहीं लिखा था, वो राइट दे दिया, पेनम्बरा में आ गया ना। उसके बाद उन्होंने कहा वो ओरिजिनलिज्म पे लोग जा रहे हैं कि जी बस आप देखें जी उसके अल्फाज में लिखा है तो लिखा है, वरना नहीं लिखा, और वो भी जो 200 साल पहले की इंटरप्रिटेशन है। Is this the state of the law in Pakistan? It is not. Is this the state of the law in terms of even full court judgments? But as a full court, as the Supreme Court, as the defenders of the Constitution, the question is, are we to allow any erosion of independence of judiciary, access to justice, and would that not be the grossest violation of fundamental rights? Indeed, my lord. With respect, अगर देखें सिद्दीकी साहब, I have not, मुझे अभी तक आपके
खूबसूरत दलाइल से मैं मुफीद नहीं हो पा रहा हूँ। I agree, sir. आप जरा अपने दलाइल अपनी मर्जी से कर लें। आप सवाल नोट कर लीजिए, आप हर चीज पे कमेंट, आप अपना दलाइल तो देना चाह रहा हूँ सर। फिर आप कल आप कहेंगे कि मेरे दलाइल ही नहीं सुने जा करके। आप चलें थोड़ा बढ़ा लें आगे बात को। With great respect to my brother, independence judiciary is not just the external aspect. The most important is internal independence and institutional independence. अब आपने concede कर लिया कि this is a law which actually secures the internal and institutional independence. मैंने नहीं So, किया। ओहो, आपने कहा एक खाली तरीका ठीक नहीं सेकंड, अच्छा लॉ है। इंटरनल और इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस क्या होता है? अगर एक चीफ जस्टिस के पास इख्तियार हो और वो इख्तियार इस्तेमाल हो सके टू अचीव सर्टन outcomes in cases and by constituting benches, that is a complete erosion of independence of judiciary. And this is an aspect which this court has never taken into consideration. So that is, dunya bhar mein, this is the most important aspect of independence of judiciary. आपको पता है बाकी मुल्कों में क्या होता है? जुडिशियल कैलेंडर स्टार्ट होने से पहले फुल कोर्ट बैठता है और वो बैलेट से बेंचेस बनते हैं, चीफ जस्टिस नहीं बनाता। और बाहर अगर आप ये बात करें कि चीफ जस्टिस बेंच बनाता है तो वो शायद इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। या बैलेट होता है या रेफल। कंट्रीज लाइक नेपाल, स्टार्ट ऑफ द कैलेंडर ईयर पहले बैलेट होता है कि बेंचेस कैसे होंगी। चीफ जस्टिस का कोई इख्तियार नहीं कि केस आज आया है और कल मैं अपनी मर्जी का एक बेंच बना दूं इस केस को सुनने का, जिसको मर्जी मैं बिठा दूं। ये चीजें तो ये सारा कानून जो है ये वाजे कर रहे हैं इन चीजों को, इंडिपेंडेंस को तो बेहतर कर रहा है, स्ट्रॉन्ग कर रहा है। आपने रूल्स बनाए हैं, उस रूल्स के अंदर एक बात की जा रही है, आपकी जजमेंट अपनी है। जवाब दे रहे हैं, आप दलाइल नहीं देना चाहते हैं, आप जवाब ना दें, दलाइल दे दें। आप इस तरह कीजिए कि आप अपने दिस दलाइल एस्पेक्ट अभी जो आप बात कर रहे हैं, आप अपने दलाइल मुकम्मल कर लें। वर्ड आर्टिकल 191 में लॉ लिखा है, whereas for example in relation to the review jurisdiction उसमें act of parliament लिखा है। It seems to me that even now if you go by the literal text of the constitution, that there is presumably a difference between the two, and law is in a common law tradition like Pakistan is well understood to mean statute law and judgment or case law. Yes. Now, Article 199 sets apparently a hierarchy. First is constitution, fundamental right, independence of judiciary. Next is law. Now, if law means, there's a question to you, if law means statute law and case law, the two are then co-equal because both are incorporated in law. So the question that strikes me is that this whole principle, rule, whatever you want to call it, that the Chief Justice is the master of the roster, in fact is not in Order 11. It is given in judgments of the Supreme Court, in law. So the question therefore is, can Parliament, which is operating at the same level, law, co-equal, can Parliament make, in the context of Article 191, and this goes to Section 8 of this particular law, can it make a law overriding in relation to the practice and procedure of the court, judge-made law, which is at the same pedestal? Can they do that? No, they cannot. Seems to me that Imtiaz even Sahab. if we literally look at Article 191, perhaps Imtiaz Sahab. it is unconstitutional. जैसा फिर अगर आपको कोई दलाइल नहीं देना है और नहीं, अब सुन लीजिए ना, आप तो हर सवाल का जवाब ही दे रहे हैं, तो आप अपनी पिटीशन तो आर्ग्यू नहीं कर रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा है। आप कोई दलाइल आप दलाइल देके खत्म कर रहे हैं, फिर आपसे सवाल पूछ लेंगे, आखिर में हमारे जहनों में होंगे, ठीक है, या हम अपने जजमेंट्स में लिख देंगे, हर जज अपनी राय लिख देगा अपनी मर्जी से। आप प्लीज अपने दलाइल दीजिए। May I proceed on? जी प्लीज। I'll only make one observation. It is settled law by law that the Parliament has the power to make our judgments ineffective, and this is a precedent जो कि is embedded in our constitution. If they are lawfully empowered.
if the parliament is lawfully empowered, not otherwise. फिर आप बहस करने लगे। But surely that आप सुन तो लीजिए ना बात को, फिर आप नोट कर लें भाई, आप आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, Sir, may I आप proceed? जज नहीं May I हैं, आप proceed? हर चीज का वैसे जवाब दे रहे May हैं। I proceed? प्लीज डू सो। आपको इसके एक जरा supplemental आप to चलें, what my शुरू कीजिए, बिस्मिल्लाह learned- कीजिए। My learned brother has asked you, surely that rule that Parliament can override judgments of the Supreme Court does not apply to a judgment which is interpreting constitutional setting or interpreting the Constitution or setting or establishing constitutional law. That only either can be done by constitutional amendment or if the court itself revisits that view. I thought that was also settled. Yes. सिद्दीकी साहब जरा The- सिद्दीकी साहब एक क्वेश्चन। आपका कहना ये है कि 3 मेंबर्स अगर बैठ के बेंचेस बनाएंगे एज पर दिस, तो ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पर के खिलाफ है। तो क्या हम 17 जजेस बैठकर जब रूल बनाएंगे, हम कोई ऐसा रूल बना सकते हैं जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को लेके एक शख्स के हवाले कर दे, या ऐसा रूल बनाएं जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? सर कर तो सकते हैं, आपने अगर एक अनलिमिटेड पावर्स है। My lord, नहीं, just one minute. May I request my brothers, इनको बहस तो करने दीजिए, हम सब सवाल बाद में कर लेंगे। आप प्लीज अपने हिसाब से अपने आर्गू my lord, कीजिए। Mr. Siddiqui, if I may just add, it is not a question of ये law गलत है या ये law बुरा है या अच्छा है. The fundamental question here is of competence. yes. Who is competent to make whatever it may be called the rules of the law? If ये तो आपने somebody आर्ग्यू is नहीं not किया अभी तक। competent, सर मैं ये तो कह रहा हूँ, आप हमें रोक के क्या मुझे आर्गुमेंट सुन सर लीजिए। मैं तो कह रहा हूँ कि कॉम्पिटेंस नहीं है पार्लियामेंट आप बताएं ना, हमें शिक दें कायरीन की। डायरेक्ट उसी पे आ जाए मेरे ख्याल में। इसी पे आ जाए, यही सवाल है। देखिए अगर देखिए मैं आप देखिए, आप हमसे ज्यादा समझते हैं, वकील हैं, यकीन हम लोगों की अपनी अपनी राय हैं, ठीक है। मुझे आप जरा सुन लीजिए ना 2 मिनट जी। वो हम अपने, अगर हम एक दूसरे से इत्तेफाक नहीं करेंगे, अलग अलग राय लिख देंगे, ठीक है। मेरे हिसाब से मुनासिब नहीं है कि हम सवाल के तौर पे अपनी राय आपको दें और फिर कोई हम दूसरा जवाब दें। हम सिर्फ सवाल पूछ रहेंगे आपसे, आखिर में आप अपने दलाइल दे दीजिए, हम उसको नोट कर लेते हैं। हमें पसंद नहीं आए तो फिर हम सवाल, इतने पसंद आए शायद सवाल ही ना पूछें, नहीं पसंद आए 2-4 सवाल पूछ लेंगे। अब आप बिस्मिल्लाह कीजिए जी। Lord, the concept of trichotomy of power is a concept well known to your lordships. The Constitution, what are those provisions which relate to the trichotomy of power, and let us have a look at them. With reference to the Supreme Court, have a look at Article 176, my lord. जी, Article 176. जी पढ़िए। My lord, Article 176 says, the Supreme Court shall consist of a Chief Justice, to be known as the Chief Justice of Pakistan, and so many other judges as may be determined by Act of Majlis Shura, Parliament, or until so determined as may be fixed by the President. What this article says is that one of the first step is the appointment of the Chief Justice. He is the centrifugal force, he is the linchpin, and once he is appointed and the rest of these members are not appointed, the Supreme Court will be there. And then the judges will be appointed. प्लीज चलिए ना, डोंट स्टेट द ऑब्वियस, इट्स रिटन देयर। देखिए दिस इज आप- रियली आप- नो यही तो सॉरी मुझे टू से अफसोस है। आई आपको पता है अवाम कितनी पैसे खर्च कर रही है। सर, हमने मैं ये आप अवाम की ऐसी खिदमत के ऐसी लिए- बातें तो ना करें हुजूर। सर आप मुझे आर्ग्यू, आप एक तरफ कहते हैं आर्ग्यू करें, दूसरी तरफ आप मुझे आप कह रहे हैं ये आपने पढ़ लिया। I am interpreting, I am just Don't giving need your interpretation of the obvious. Supreme Court comprises of Chief Justice and Judges of the Supreme Court. Obvious. No, it is not. अच्छा, it's not. It is not. बताइए। I am giving you, your lordship, a circumstance that let us assume
to understand the dynamic of Article 176 that assume there's a Chief Justice and there's no other judge. The question is, will the Supreme Court come into existence? The answer is yes. I will not answer your question. We We are not here. I am not here in a answering. theoretical realm. Please don't. No, now this is not fair. We are not here in a theoretical realm to discuss what may or may not happen. We are faced with a particular law. You challenge that law. Argue that case. Let us proceed further, my lord. Let us go to Article 87. Article 87 relates to the Parliament and the Senate. Each house shall have a separate secretariat. Majlis provided that nothing in this clause shall be construed as preventing the creation of posts common to both the houses. Sub-Article 2, Majlis Shura Parliament may by law regulate the recruitment and condition of service of person appointed to the secretarial staff of either house. Until provision 3, until provision is made by Majlis Shura under clause 2, the Speaker or as the case may be, the Chairman may with the approval of the President make rules regulating the recruitment and conditions of service of person appointed to the Secretarial Staff of the National Assembly or Senate. So this is the rule-making power. Let's go to Article 67. I will not allow it, and I might even start imposing costs. Let's go here, let's go there. What's the relevance of Article 187? Don't do this. Sorry, please don't do this. Please don't do this. It shows that the Parliament as a separate organ of the state profound as the power to make rules for its internal working. And this is the theme which is contained in Article 67. No. ये रूल सिर्फ बनाएंगे किसके लिए? सेक्रेटेरिएट हमने तो नहीं बनाए लिए, अपॉइंटमेंट के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए और उसके लिए तीन चीजें लिखी हुई हैं साहब. सर, मैं आपको शो ये करना चाह रहा हूँ कि पार्लियामेंट का अलग सेट ऑफ रूल्स है, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव का अलग है, सुप्रीम कोर्ट का अलग है. और ये रूल्स जो हैं, आप सुप्रीम कोर्ट वाले पे आ जाइए ना. हम पार्लियामेंट के रूल्स जब वो चैलेंज करेंगे ना आप कि उन्होंने गलत बनाए, वो देख लेंगे. अभी आप सुप्रीम कोर्ट पे आ जाइए. सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं आर्टिकल 191, उसकी तशरीह कर दें, खत्म. subject to the Constitution and law, the Supreme Court may make rules regulating the practice and procedure of the court. Now, the law is a word which is different from the act of the Parliament. It may... Law is different from act of Parliament? Yes, it is. Law is this is something I've never heard before. Yes, sir. Allow me to assist you. Law encompasses a lot of other things than the act of the Parliament. Law includes with it itself usage having the force of law. Refer to Article 8. In the same sentence, the Parliament Ain has used Constitution, law and rules. And please, I'm not going to expect this kind of arguments before the Supreme Court. Sorry, this is not on. I'm giving your Lordship extraordinarily good argument. If your Lordship is inclined to ridicule me like that, I will not. I will withdraw from the case. I don't allow this. Please, that's your choice. Your Lordship has constantly thwarted my arguments again and again. Have a patience to hear my arguments. ये बताइए जो बेचारे लोग जेल में पड़े हुए हैं ना, बेचारों को छोड़ दे सर. छोड़ेंगे नहीं हम. मैं बचा रहा हूँ, मैं सही हूँ. हाँ नहीं. मैं भी नीचे से कौन फैसला करेगा? एक चीज होती है अमेरिकन आइन में, वो लोग करते हैं क्या होता है, फिलिबस्टरिंग, कि जी चलते रहो. अगर आप समझ ही रहे हैं कि इस तरह से मैं ऐसा कर ही नहीं रहा. अभी आपने मुझे आपको हम सुनते हैं, मगर आप हमारी बात को सुनना पसंद नहीं फरमाते हैं. तो ये देखिए, आधे घंटे से सुन लो. If I've got you correctly, you're saying that law is not only the act of the Parliament, because there are rules of 1980. If there were no rules, fine, they could have enacted that law. Because they have the rules of 1980,
So that's why they were not empowered to pass My lord, any law which was contrary to it. I would not go to that extent. Assume there are no rules. Assume. The question is whether the parliament can frame this law or not is a question which probably is not free from doubt. I would still say the parliament can't do it. Rules are imperative. If your lordship would look at Article 8, if your lordship would look at, if your lordship would look at Article 8. इम्तियाज साहब, Sir. ये सिंपल हो गया है. आप ये कह रहे हैं कि इस आर्टिकल में एक्सप्रेशन लॉ जो इस्तेमाल हुआ है, this excludes an enactment of the parliament. No, my lord, I am not saying this at all. I say law has a larger composition than the act of the parliament. So we are, at this moment, we are only concerned with an act of the parliament. Your lordship has asked me a question, what is the scope of the word law? And I'm trying to assist your lordship. In this case, it's not relevant because the law has already come. My lord, Question, आपने सिर्फ I am saying that this law, your lordship's assumption is that since the word law has been used in Article 191, therefore the parliament can make this law. I am trying to show to your lordship it is not the case. I'll take you back to my original question, Please, lordship. where under a constitutional power, this court has framed rules. Do they stand on a higher footing than ordinary legislation? Yes, my lord, there are judgments to that effect rendered by your lordships. Can I ask a question as well? When the Constitution makes a distinction in different articles using the Act of Parliament and using the word law, so how do you see that distinction? So for example, in 191, they could have said subject to the Constitution and Act of Parliament, but instead of saying that, they've used the word subject to the Constitution and the law. There are other provisions of the Constitution which don't use the word law, but use the word Act of Parliament. So there is a clear difference between an Act of Parliament and the word law. So what do you understand by the word law? Because this provision of making rules is subject to the Constitution and the law. In essence, the framers of the Constitution were conscious of the distinction between an act of the Parliament and the law, while they envisaged the law includes judge-made law and other variations of the law. Act of Parliament was specifically used in a particular sense, and they can't be used interchangeably. And whether this enactment, Act of Parliament, cannot be considered as law? My lord, in ordinary parlance, there may be impression. No, I'm talking specifically but about this. Within the context of Article 199, this is not law. It is the constitution and law. It would mean law in a broader context. And what are those? Laws which are protected under Article 270AA. Usage or customary practice having the force of law in terms of Article 8. And judge-made law, the judicial precedents which your lordships have given time to time to the people of Pakistan to show to them what law is. I got your point. You say that every usage, custom can be considered as law, but cannot be considered as act of the parliament. Yes. Whereas act of the parliament can be considered as act of the parliament as well as law. Yes. So then it is not a law. I am saying the context in which the word law has been used in the phraseology of Article 191 manifests that this is not an ordinary act of parliament. It means the law which has been rendered from time to time in the form of judgments of the superior courts. Do you think, or are you arguing that it is the exclusive power of this court under Article 191 to make rules? Absolutely. And those rules, once that power has been exercised, whether by specifically making rules or through law, that is judge-made law,
ordinary legislation cannot override that because there is no legislative competence to do that in terms of item 51. It is precisely my argument. I will go a step further. Vicky, before you do that, that's very interesting. I'm just recalling the equivalent provision in the Indian Constitution is Article 145 relating to the rules of the Supreme Court. Now this has very interesting language. It says subject to the provisions of any law made by Parliament. Yes. The Supreme Court may from time to time with the approval of the President make rules, etc. So here, in relation to law, they are clarifying it is statute law or made by Parliament. Whereas in our case, it is just law. So the rules, the law includes any decision of the court which sets out the practice and procedure of the court. And to that extent, statute law cannot override it, cannot supplant it, cannot whittle it down until the court itself revisits that law on the judicial side. Maybe it cannot even be done by the full court sitting on the administrative side. Can't be. Go back, because there is a certain equivalence between what the court can do on the administrative side to make its rules and what Parliament can do maybe in terms of statute law. But it seems to be that use of, speaking for myself, the use of the word law, which includes case law or judgment law, even the full court on the administrative side cannot overrule that. So this rule, which is supposedly overruled by sections 2 and 3, master of the roster, that is judgment law. And therefore, even the full court sitting on the administrative side can't do it unless the court revisits that principle on the judicial side. Imtiaz Sahab, how will we read into this provision 191? It's a constitutional provision. We'll have to read into it that the law only means judgment law. फिर अगर आपका argument ले लिया जाए तो इस law expression से enactment is excluded, but even a usage or a custom would override a rule made by all of us. My Lord, my submission is as follows. Allow me just follow your Lordship's consumption. My Lord, the Constitution as I read it, and I make submission with respect to your Lordships, the Supreme Court of Pakistan has held that notwithstanding the rules and the rules which are framed under the constitutional scheme, they are on a higher pedestal than the ordinary law. Even conventions which have been judicially recognized by the superior courts are constitution by themselves, and the Parliament cannot encroach upon them. This is next point. इम्तियाज साहब पहले इस fundamental उसको clear कर दें. Do we have to read into the expression law that it is only confined to the judgments of this court and the precedent law? Your Lordship will appreciate the contours of the word law, which has been used with reference to the Constitution in terms of Article 181 and the scope of that word. And if your Lordships come to the conclusion that this includes the case law rendered by the superior courts have said that even conventions, if they are proven before the court in the constitutional domain, they are the Constitution themselves and violation cannot take place. ये जो लॉ है आपके ख्याल में ये 191 में नहीं आता, ये किस कैटेगरी का लॉ है? ये कैटेगरी सर अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, ये आते ही नहीं है. In which category you will fall this law, because this is act of the Parliament. 191. The definition of law is something else which you are trying to. This is an act of the Parliament. It comes out of the outer scheme of the word law, and there are other sources How of it law. is out of the word scheme of law? What is your argument on this point? My argument is that to isolate the word law with reference to act of Parliament alone
What about Article 140 and 141, where is also the word law has been Yes, used? what I'm saying this is that Article 141 and 142 The relate main to. article of the Constitution in which the laws are made by the Parliament. Well, And what- under Article 141, the law is mentioned. If it is not the law, then what is the category of this Well, law? Lord, Because we are Article going to develop a new jurisprudence No, well, in this case. The Article- third category of law. Article 141 has to be read with the fourth schedule, and it cannot be read in isolation. What it means is this, that these are the laws which will be enacted through Act of Parliament. No, if you will read Article 142, if you will read Article 142, सिद्दीकी the साहब अगर Majlis Shura, सिद्दीकी साहब अगर कॉम्पिटेंस की बात है ना, कॉम्पिटेंस की अगर बात जो बार बार सवाल हो रहा है, तो एंट्री 55 और 59 को पढ़ लें, उसमें तो पावर है ना कि पावर्स लॉ आ सकता है। सर, लॉ एनलार्जमेंट के लिए फॉर आगे एग्जांपल, पढ़े ना, सप्लीमेंटल पावर्स भी दे सकता है। सर ये सप्लीमेंटल पावर नहीं ये है, बहस आप ये कर सकते हैं। इंटरनल वर्किंग को इंटरफियर किए जा ठीक रहे हो हैं। गया, तो आप ये बहस करें ना कि ये सप्लीमेंटल पावर्स के अंदर है या नहीं है, या एंसिलरी पावर्स के अंदर है कि सर, नहीं। आप तो कह रहे हैं लॉ ही नहीं नो, बना तो सर मैं बताता हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर ये लॉ ये हो कि आपको फॉर एग्जांपल इलेक्शन एक्ट के तहत डायरेक्ट अपील दी जा रही है सुप्रीम कोर्ट में, या सर्विस मैटर्स में दी जा रही है, तो वो इनलार्जमेंट ऑफ जुरिसडिक्शन हो सकती है, लेकिन आपकी इंटरनल वर्किंग के अंदर लॉ फ्रेम नहीं हो सकता। नहीं, देखें ना, एक सेकंड, बड़ा सिंपल सा सवाल है, अगर हम फोकस कर लें तो बड़ी जल्दी मामला हल हो सकता है। एक तो ये है कि लॉ इन्विजिज किया 191 ने, तो कानून आइन रिडंडेंट नहीं होता, कुछ चीज़ कानून ऐसा हो सकता है। उसी आइन के अंदर लिखा है कि 55 में सप्लीमेंटल पावर्स दे सकता है, 59 में लिखा है और एंसिलरी मैटर्स भी देख सकता है। अब आपने सिर्फ हमें ये बताना है कि क्या पार्लियामेंट ऐसा कोई कानून बना सकती है 55, 59 और भी शायद एक आध प्रोविजन एंट्री के तहत जो रेगुलेट कर ले अफेयर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सर, क्योंकि 191 इन्विजिज करता है कि ऐसा कानून हो सकता है, तो सुन लीजिए, तो वो कानून रिडंडेंट तो लफ्ज नहीं हो सकता ना 191 में। एक कानून ऐसा होता है कोई जो रेगुलेट करे प्रोसीजर को, उसकी पावर 55 और 59 में दी हुई है। आपका ये बहस हो सकती है कि सर इसमें से वो पावर नहीं निकलती फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल लेजिस्लेचर की, वो आप बता दें हमें बस सीधा। सर, दिस item 55 first makes a prohibition. वो हमने पढ़ लिया, मैं आखिरी लाइन सर, की बात मुझे आपने पढ़ लिया है, मैं भी सारी जिंदगी I've been rubbing shoulders with your lordship. This creates an impediment on the word jurisdiction and power. वो आगे इसके भी ऊपर मिला तो के- फुल स्टॉप है। इसको पूरा पढ़िए ना, मिला के सर, इसको बिट्स एंड पीसेस में jurisdiction- बिट्स सर, एंड मैं पीसेस दोबारा में पढ़ूंगा पढ़ें तो वो इसको। कहेंगे कि दोबारा पढ़ रहे हैं आप। नहीं, इसमें आगे जाके Jurisdiction and power of all courts except the Supreme Court. ये jurisdiction and power पे नहीं आप लॉ बना सकते। आगे पढ़े चलें। With respect to any matter in the list and to such extent as is expressly authorized by or under the Constitution, the enlargement of jurisdiction of the Supreme Court. कर सकते हैं ना Enlargement हो सकती है। आगे। बस Enlargement के लिए भी there has to be a specific, ये जो language used है, specific authorization. Yes. Now where is the specific authorization? नहीं, आगे पढ़े, You have अगर to आपसे read आगे it. पढ़े इनलार्जमेंट And conferring thereon of supplemental powers. सप्लीमेंटल पावर्स पार्लियामेंट लगा सकता है, दे सकता है सुप्रीम कोर्ट को। सप्लीमेंटल पावर्स ये है कि आपको वो कह सकता है कि आप फाइनेंस से ये पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, या आप ये लिटिगेंट को कोई अपील आई है तो उस पर ये टिकट लगा के पैसा सुप्रीम कोर्ट में डिपॉजिट हो सकता है। ये सप्लीमेंटल दो पावर्स pieces में हैं। वो ये नहीं कह सकते कि चीफ जस्टिस साहब अकेले फैसला नहीं करेंगे, हम नहीं मानते इस बात को। पावर दे रहे हैं कि चार और लोग नहीं, वो ये नहीं कह रहे, वो रेगुलेट कर रहे हैं पावर ऑफ द चीफ इम्तियाज जस्टिस साहब, इम्तियाज साहब, रिलेटिंग टू इम्तियाज साहब, jurisdiction and इसको powers. दो पीस में पढ़े ना आप प्लीज। देखिए इसका ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो इसका ये वाला इंटरप्रिटेशन है इसका, एज सच एक्सटेंट as is expressly authorized by or under the constitution the enlargement of the jurisdiction of the supreme court, एक and के बाद जो है ना वो conferring thereon of supplemental power। 59 अगर इसको 191 के साथ आप मिला के पढ़ते हैं तो subject to constitution and law।
तो ये वाली जो बात दो हिस्सों में है, इसको आप सप्लीमेंटल पावर को आप थोड़ी देर के लिए अलग भी कर दें तो वो एंड है, वो और नहीं है। ये कह ये रहा है, ये आर्टिकल 191, अगर आप आर्टिकल 191 को सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के खिलाफ दरखास्तों पर इस वक्त समाअत जारी है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट समाअत कर रहा है। तारीख में पहली मर्तबा फुल कोर्ट की समाअत पीटीवी न्यूज और पीटीवी नेशनल पर बराह रास्त नशर की जा रही है। निकला वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का 5 रोज़ा दौरा अमरीका। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 78वें इजलास से खिताब और आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें और मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक अहम कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। निकला वजीर आजम दौरे में बैनुल अक़वामी ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से मुलाकातें और अमरीका के मारूफ थिंक टैंक्स का दौरा भी करेंगे। डॉलर की कदर में मुसलसल कमी का सिलसिला जारी। 1 रुपए 27 पैसे मजीद सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 295 रुपए 53 पैसे पर पहुंच गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 110 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स 45,866 पर ट्रेड कर रहा है। मुल्क भर में बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। संगीन जुर्म में मुलविस अफराद के खिलाफ मुकदमात का इंदराज। मुतादिद अफराद गिरफ्तार और जुर्माने आयद किए गए। बिजली चोरों को किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा। बिजली चोरी और सहूलतकारी में मुलविस मुलाजिमीन के खिलाफ भी मुकदमात दर्ज कराए जाएंगे। गैपको चीफ। ANF इंटेलिजेंस की मुनशियात स्मगलिंग के खिलाफ कोयटा में बड़ी कार्रवाई। ट्रक से सवार 2 टन से ज्यादा मुनशियात बरामद। 4 मुनशियात स्मगलर्स गिरफ्तार। मुल्ज़िमान के खिलाफ इंसदाद मुनशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। गिरोह के दीगर अरकान की गिरफ्तारी के लिए तफ्तीश जारी। तर्जुमान ANF। जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयों के नतीजे में हुकूमत को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। निगरान हुकूमत के इक़दाम साबिका हुकूमतों से बेहतर और कारकर्दगी काबिल सताइश है। जखीरा अंदोजों के खिलाफ ऑपरेशन निगरान हुकूमत आर्मी चीफ की मुश्तरका काविशों का नतीजा है। इनके इक़दाम लायक तहसीन है। जखीरा अंदोजी के खिलाफ क्रैकडाउन पर अवामी रद्द-ए-अमल। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए हुकूमत और पाक फौज की मुश्तरका काविशें। अवाम का निगरान हुकूमत और पाक फौज की कार्रवाइयों का खैर मकदम। चीनी की स्मगलिंग और डॉलर माफिया के खिलाफ किए गए इक़दाम से उनकी कीमतों में वाज़ेह कमी हुई। ऐसी कार्रवाइयां जारी रहनी चाहिए। मोदी सरकार की मुल्क की बदनज़मी पर से आलमी तवज्जो हटाने PLD 1997 Supreme Court 4-6. Relevant 5 and 9. 1997 PLD Supreme Court. जी सफा 511, page 511, 511. जी 511 पे कहाँ कौन सा पैराग्राफ?
My Lord, paragraph 44, the second part of it. Significantly, by employing the word any law, the intention of the Constitution seems to be that Article A will apply to all laws made by the Majlis-e-Shura Parliament, be it general or any law to amend the Constitution. Likewise, no amendment can be made in respect of provision of the Constitution relating to judiciary by which its independence and separation from executive is undermined or compromised. These are built-in limitation in Constitution completely independent from political morality and force of public opinion. I can agree with this proposition and still dismiss your petition. No, I'm just saying, so I don't know there is anything clincher here in your favor. It says these are built-in limitations in the Constitution completely independent from political morality and force of public opinion. इससे पहला बात है कि separation of executive is undermined. यहाँ तो parliamentary बात है ना, legislation. May look at PLD 1979 Supreme Court 49. एक सेकंड दूसरा बता रहे हैं PLD. PLD 1979 Supreme Court 1979 Supreme Court. PLD 1973 Supreme Court 49. Rahman's case. 73, 79. 73. My Lord, PLD 1973 Supreme Court 49. Relevant page? Relevant page is 68. 68. Then it is from 68 to 70, my Lord. To 70. ठीक. And इसी proposition पे. Please Lordship, Parliament, no law can be made compromising power of judiciary. ठीक. Paragraph 70 पे मैं जरा पढ़ना चाहूँगा सर अगर इजाज़त दे. ठीक. Married? ये आपने कहा यही proposition है. Yes, sir. तो हम पढ़ लेंगे, आप पढ़ना चाहते पढ़ लें. पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए प्लीज. My Lord, page 70. जी. Exercising paragraph. In exercising the power, the judiciary claims no supremacy over other organs of the government, but acts only as the administrator of public will. Even when it declares a legislative measure unconstitutional void, it does not do so because the judicial power is superior in degree or dignity to the legislative power, but because the Constitution has vested with the power to declare declare what the law is in the cases which comes before it. It is thus merely enforces the Constitution as a paramount law whenever a legislative enactment comes into conflict with it, because it is its duty to see that the Constitution prevails. It is only when the legislature fails to keep within its own constitutional limits, the judiciary steps in to enforce compliance with the Constitution. होती है. Yes. Enabling provision just with the court, it is an enabling provision. How it is applicable here? My Lord, और कोई केस? it says, और केस? PLD 1998 Supreme Court 161 में sir, independence judiciary is a fundamental right. Page क्या बता दे? Supreme Court. Page 161. 161. 98 Supreme Court. His Lordship. Relevant? Relevant is page 189. जी. Page 247. यही बात है अलग. Independent judiciary is a fundamental right. Advocates to ensure independence of judiciary at page 190. Advocates have locus standi, page 191. Constitutional convention as good as constitution. Any deviation amounts to deviation from the Constitution. 321, page 331. Certain questions have been asked and I wish to respond to them. अगर मैं आपके लिए आसान करूं, अगर हम अटॉर्नी जनरल को सुन लें, आपके सवाल हम सुनेंगे वापस, ठीक है? तो वो उनकी तरफ से कुछ एंग्जाइटी थी कि शायद उनको पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है कहीं,
तो वक्त बचाने के लिए आप उनके भी बात को साथ साथ कवर कर लीजिएगा, सवालों को भी कवर कर लीजिएगा। अगर आप ये माकूल तरीक़ेकार समझते हैं वो फिर चले जाएंगे। फिर आपकी एक जजमेंट पढ़ना चाह रहा था। नहीं वो आप पढ़ लीजिएगा। अगर अभी क्योंकि कहा हुआ है कि बेंचेस रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं हो सकती। नहीं ठीक है, आपने कहा भाई डिपेंडिंग ऑन रूल, हो सकता है गलत कहा हो, गलतियां भी हमसे हो जाती हैं, वो बात अलग है। मगर हम जरा अटॉर्नी जनरल को अगर आप लोग अग्री करें शॉर्ट ब्रेक करने के बाद, क्योंकि अटॉर्नी जनरल का आपको कहीं जाना है, एक सेकंड इनके भी हम आपको फिर देंगे हियरिंग, ये नहीं समझें कि आपको हम बंद सर आई एम डन माय आपको कहीं जाना है। My lord, there is a hearing scheduled in Vienna on Indus Waters Treaty for 3 days starting tomorrow. So I have to fly out tonight. Tomorrow. How long will you take? My lord, today, sir, my submissions will be precise. I have already filed my written brief. I will take 30 minutes, and then whatever questions towards the end my lords may have, I will respond to them and might furnish a response in writing as well. So I have already filed my written brief. I'll take 30 minutes by the clock. There's वैसे भी right of audiences with the Attorney General. Have you raised any primary legal objections to maintainability or not? Yes, my lord, I have a ठीक है, तो I think we'll take a short break. My lord. आप ठीक है, आप अग्री करते हैं? नहीं ये आप भी बातें सुन लीजिए। Do I have a choice? I don't have a choice. No, I don't have a choice. You have a choice. You're most kind if you agree with me. I'll be obliged. It's a rare we will hear you. My lord, it's a rare moment during these proceedings that I agree with your lordship. नहीं आपने बड़े Otherwise, from morning I have not been agreeing with your lordship. तो आप we will let's say we'll come back at 3 o'clock or 10 to 3 कर लेते हैं। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत जारी थी। फिल वक्त के लिए वक्फा लिया गया है समाअत में और दोबारा 3 बजे रिज्यूम करने का कहा जा रहा है। जी नाज़रीन, मुल्क की तारीख में पहली मरतबा सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई बराह रास्त नशर की जा रही है एक्सक्लूसिवली ऑन पीटीवी न्यूज़ और पीटीवी नेशनल पर भी आप ये कार्रवाई बराह रास्त देख सकते हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट दरखास्तों पर समाअत कर रहा था। फिल वक्त के लिए वक्फा लिया जा रहा है समाअत में और कहा यह जा रहा है कि दोबारा 3 बजे इसको गालिबन रिज्यूम किया जाएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। ज़माने की कसम खाकर फरमाया, इन्नल